Hello everyone, this is video number 3 in the series of Mixture and Alligation, and why this is going to be really very important for you is profit and loss problems are combined with Mixture and Alligation problems in your examinations all the time. So कैसे problems आते हैं और आप कैसे उनके साथ deal कर सकते हो, that is what is going to be our agenda in this particular video. So let us try to solve this very first question out here. It says that in what ratio two varieties of rice 10 rupees per kilogram and 20 rupees per kilogram should be mixed. Now you're mixing two varieties and their cost prices are given to you. By that's 10 rupees per kilogram and 20 rupees per kilogram. These are the cost prices, right? And problem tells you that they are being mixed और उस mixture को बेचा गया और उस mixture को कितने % profit पे बेचा गया, 25% profit पे बेचा गया. So first of all you should have that understanding of profit and loss as to how you should be finding out cost price of the mixture. ये आपने 10 वीडियोस जो हमने बनाई हुई है आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें देखा हुआ है, राइट? अब यहां पे दे क्या रखा हुआ है? यू हैव गॉट सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर. इट इज गिवन टू यू एज 20 रुपीज पर किलोग्राम. एंड हाउ मच इज द प्रॉफिट? इट इज 25%. So you know that selling price is equal to cost price plus profit, and selling price being 20 rupees, cost price and profit is 25%, and it is taken over this cost price. That is what we learned in profit and loss videos. Please go and watch those videos. They are really very important for you. दुनिया जहान के सारे कॉन्सेप्ट वहां पे आपके क्लियर हो जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन के. ऐसी वीडियोस आपके लिए बना के रखी गई हैं. So CP plus, so this is going to be what? 1/4 of CP, and if you simplify this, it is coming out as what? 5/4 of CP is equal to 20, and hence cost price comes out as 4/5 of 20. That comes out as 16 rupees. Now, if you have seen my videos of profit and loss, then probably you will not be doing any of these steps, because इतने सारे स्टेप्स एग्जाम में लिखेगा कौन? हमने क्या सीखा था? इफ प्रॉफिट इज 25%, देन यू नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस. दैट इज व्हाट वी लर्नड in our profit and loss videos. So this one is coming out as 5/4 into CP. It is given to you as 20. So what is going to be CP? It is going to be 20 into 4/5. Now अंडरस्टैंडिंग तब अच्छी जब आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख दो एग्जाम में, और अगर आप डायरेक्टली लिख पा रहे हो तो फिर आपके लिए बड़ी अच्छी बात है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 16 रुपीज पर किलोग्राम. 16 रुपीज पर किलोग्राम इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, isn't it? Now you know that there are two varieties that are being mixed. The price of one variety is 10 rupees per kilogram, and price of another variety is given to you as 20 rupees per kilogram, and price of the mixture is coming out as 16. So in what ratio we should be mixing them, ये निकालना हमारे लिए हो गया आसान, because 20 minus 16 is 4, and 16 minus 10 is going to be 6. If you simplify them, in what ratio you are going to be mixing them? You're going to be mixing them in 2:3 ratio. So this is what is type 1 and this is type 2. So what is your problem out here? The problem is in what ratio should they be mixed? They should be mixed in 2:3 ratio. Now you might also be wondering कि आपने cost price से ही इसको क्यों निकाला? Why can you not take selling price of all the three? So उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है. मैंने हमेशा बोला कि प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हुए जितने भी वैल्यूज आप लिखोगे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू दिस वेरी, जितनी भी वैल्यूज आप लिखोगे ना वो सारे के सारे होमोजेनियस होने चाहिए. अगर आप मिक्सचर का सेलिंग प्राइस लिख रहे हो तो दोनों वैरायटी का भी सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा. अगर आप दोनों वैरायटीज की कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो तो मिक्सचर का भी आपको सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा. सो व्हाट इफ आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय टेकिंग दिस? अंडरस्टैंड probably this will simplify things for you. This is type 1, this is type 2, and profit you know is 25%, isn't it? So type 1, the price has been given to you as 10 rupees per kilogram. I'll say that okay 25% बढ़ा के लिखते हैं तो ये कितना लिख दूंगा मैं? 12.50. And type 2, the cost price of type 2 is 20 rupees per kilogram. 20 rupees का निकाल दो 25%, 1/4, 5 रुपया बढ़ेगा. This is coming out as
25. Now you can write selling price of mixture as 20. So this is selling price of variety 1, selling price of variety 2, and this is selling price of the mixture. So in what ratio we should be mixing them? 25 minus this is coming out as 5, and this one is coming out as what? 7.50. If you simplify this again, don't you think we are again going to get 2 by 2 is to 3 again? So that problem is absolutely simple. So your understanding has to be thoroughly clear about it, right? I hope you're getting my point. Now, pause the video. This is very similar problem. You can solve this one. Try to solve this question on your own. And it was this one says that in what ratio must a grocer mix two varieties of tea, 60 rupees per kilogram and 65 rupees per kilogram. Selling price of the mixture is given to you as 68.20. So selling price is equal to, what did I say, is 10% gain. So I would write this as 110% of CP. Probably if you're not understanding this, then you have to visit my 10 videos of profit and loss. And this one is 68.20. So CP comes out as 10 over 11 into 68.20. And if had it been the examination, I would have written this step directly. But how do I simplify this? This is 6 and then 0.2, and cost price of the mixture comes out as 62 rupees per किलोग्राम. बन गई बात हमारी, सिंपल हो गया. अब आपके पास में दो वैल्यूज दे के रखा हुआ है. वो क्या दे के रखा हुआ है? यहाँ पे दे के रखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर, no, cost price of say variety 1 and variety 2. So cost price of variety 1 is 60, cost price of variety 2 is 65, and cost price of the mixture, now you understand, is 62. So 65 minus 62, it is coming out as 3, and 62 minus 60 comes out as this. So variety 1 and variety 2 should be mixed in 3:2 ratio. So over here the answer is 3:2, and you should be always very careful when you're putting your answer, because sometimes when options are 3:2 and 2:3, this is where students tend to make mistake, right? Chalo ji, we'll solve this problem. It says that how many kilograms of sugar costing 9 rupees per kilogram be mixed with 27 kilogram. अब कुछ ना कुछ तो कहानियां बोलेगा वो. देखो ना, चार चीजें हैं आपके पास में, एक वेराइटी 1, एक वेराइटी 2, और यहाँ पे एक मिक्सचर, और यहाँ पे एक रेशियो. देयर आर 4 थिंग्स. उन चारों में से कोई भी मेजरली हो क्या रहा है? ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, then you are finding out in what ratio these two are being mixed. But sometimes there is a possibility when they give you this and this and this, and they try to ask you what is going to be this one. So that is what is happening in this problem. Problem बोलता है how many kilograms of sugar costing rupees 9 per kilogram must be mixed with 27 kilogram of. So first of all, you have been given selling price of the mixture as 9.24. Understand this. पहले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या कैसे इसको सिंप्लीफाई किया था? We took it as 110% of CP. So this is 11 by 10 CP. So what is going to be cost price of this mixture? 9.24 into 10 by 11. And if you simplify this thing, this is 8.4, and cost price of the mixture comes out as 84 rupees per kilogram. That's step number 1. ये तो आपको करना ही पड़ेगा. अब आपके पास में क्या आ गया? There are two varieties. Two varieties are what? One is so this one is 8.40. Sorry if I made a mistake here. So first variety, the price is 7 rupees per kilogram, and the cost price of the second variety is 9 rupees per kilogram. अब बनी क्या बात? ये दे के रखा है आपको 8.4. आप सिंप्लीफाई कर दो इसको. 9 minus 8.4 is what? 0.60. And 8.4 minus 7 is coming out as what? 1.40. We need to simplify this, isn't it? How do we simplify this? If you multiply both of them with 10, it is coming out as 6 and 14. If you divide both of these two by
2, it is going to be 3:7 ratio. So we need to be mixing these two varieties in 3:7 ratio. अब प्रॉब्लम ये बोला गया कि मैंने क्या बोल दिया, वेराइटी 1 एंड वेराइटी 2 शुड बी मिक्सड इन 3:7 रेशियो. आपके पास प्रॉब्लम क्या बोलता है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपीज. सो दिस यू डू नॉट नो, and 27 kilogram of sugar costing this variety. So variety 1 is what, 27 rupees per kilogram. So this is given to you as 27 kilogram. Had it been 3, this variety would have been 7, because ये 3 से कहाँ गया, 27 9 से multiply होके. So this one will also be multiplied by 9. 7 into 9, how many kilograms, 63 kilogram, right? अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. How do you do that? So the first variety you should take it as 3x and 7x, x being a multiplying factor. In this case it is given to you as 27, so this is where you can find out the value of x, which will come out as 9. How much is going to be the second variety, 7 into 9, which is 63. देखो ना, आप छोटे छोटे स्टेप से 10 सेकेंड 5 सेकेंड जब आप बचाते हो ना, ये आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल हो जाता है. दैट इज व्हाट यू लर्न इन दीज काइंड ऑफ वीडियोस, and they're very important for your solution. Every time you cannot do things step by step. Now if you're understanding this thing, I have got this problem. अब now these are the kind of problems जो ना बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को परेशान करके रखते हुए, और लोग आगे पूछते हैं कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, and they are very very simple. For this you should be watching my particularly profit and loss video number 4. Watch profit and loss video number 4 if you are not getting this concept. मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप देखो कैसे कर रहा हूं मैं. A milkman mixed some water with milk to gain 25% by selling the mixture at the cost price. ये झूठा आदमी ये क्लेम कर रहा है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, है ना. कॉस्ट प्राइस पे बेचने के बाद भी अगर इसको 25% का फायदा हो गया तो वो फायदा हुआ कहां से, पानी मिलाया ना इसने, तभी तो फायदा हुआ इसको. तो मैं क्या मान के चलता हूं, देख लो इसको, सीखो आप. मेरे मिल्क की जो मैंने कॉस्ट प्राइस ली वो 100 रुपीज पर लीटर ले ली, ठीक है जी. डजंट मेक अ डिफरेंस. से आई एम द मिल्कमैन, यू कम टू मी एंड से दैट यू सी यू हैव बीन माय स्टूडेंट, वेरी गुड, बट आई ब्रॉट इट एट 100 रुपीज पर लीटर. भाई जितनी मेरी कॉस्ट प्राइस है उतना तो देके चले जाओ, ताकि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए. आप बोलो देखो सर तो बड़े अच्छे हैं बेचारे, सीधे साधे आदमी है, जितने का खरीदा उतने का दे रहे हैं. बट ऐसा करके सर ने 25% प्रॉफिट कमा लिया. तो सर आपको क्या लगा, क्या लगा कि सर ने जितने का खरीदा उतने का बेचा, यानी यू आर पेइंग मी 100 रुपीज. सो व्हाट कस्टमर पेज इज द सेलिंग प्राइस. अंडर द अजम्पशन दैट यू आर गेटिंग प्योर मिल्क फ्रॉम मी, यू आर पेइंग मी 100 रुपीज. और शॉपकीपर एंड इन दिस सिचुएशन मी, जितने का भी मैं आपको सामान दे दूं दैट इज गोइंग टू बी माई कॉस्ट प्राइस. और मैंने आपसे प्रॉफिट कितना कमा लिया, 25% कमा लिया. तो इसका मतलब मैंने 1 लीटर तो दूध आपको दिया नहीं. तो पता कर लेते हैं कि कितना दूध दिया मैंने. मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से कितना दिया मैंने. तो सेलिंग प्राइस इज 25%. नाउ अंडरस्टैंड दिस. सेलिंग प्राइस आई वुड राइट दिस एज 125% ऑफ सीपी. 125% को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे 5/4 इंटू सीपी, एंड सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज. So what is the cost price? The cost price if you simplify is coming out as 80 rupees. यानी मैंने आपको उस 1 लीटर में जो दूध दिया वो दिया 80 रुपीज का. तो जो नहीं दिया दूध वो गया आपको पानी. So this is going to be, understand this very simple thing. मिल्क अगर आपको दे दिया 80 रुपीज का, और वाटर मैं कितने का दूंगा, 20 रुपीज का. और ये वाटर 20 रुपीज का होगा नहीं, यही 20 रुपीज तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना, isn't it? यही तो मैं 20 रुपीज प्रॉफिट कमाऊंगा, बिकॉज you're the under this assumption that you're getting 1 liter of pure milk, but I am not giving you pure milk, I am mixing water into this. So rather than giving you milk worth 100 rupees, I'm giving you milk worth only 80 rupees. तो ये 20 रुपीज का जो मैंने मिलाया वो मेरा पानी था, और उसी पानी का मैंने प्रॉफिट कमा लिया. So what is going to be the ratio of milk and water? Milk 80 rupees का, water 20 rupees का. I would say this is 4:1. मेरा काम हो गया खत्म. यानी उस मिक्सचर में 800 ml was milk and 200 ml was water. I hope you're getting this. Go in the comment section if you have understood this particular concept.
व्हाट इज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जितने का कस्टमर सामान लेके जाएगा, जितना कस्टमर पे करेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। आप जितने का सामान दे दो कस्टमर को, वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। नाउ if you understand this, please go and solve this one. This one says that a dishonest milkman professes to sell his milk at cost price. वही बात हो रही है, झूठे आदमी है, मक्कार आदमी, बट कुछ तो उसने पानी और दूध उसको मिला दिया और उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर, आपने बिल्कुल पिछला वाला प्रॉब्लम है। पिछला वाला प्रॉब्लम क्या था, उसने कमाया 25% प्रॉफिट, इजंट इट। अब ये आपका मिल्क एंड वाटर कितना आ गया था, 80-20 विच इज 4:1। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मिल्क एंड वाटर इज गिवन टू यू एज 4:1, so milk is 4/5 and water is 1/5 of the total, and if you multiply both of these two values by 100, that's how you convert ratios into percentages. So it is coming out as 80% and 20%. So in that solution 80% is milk and 20% is water problem, simplify हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी आप बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। हाउ अबाउट दिस वन, इसको ना सॉल्व करते करते स्टूडेंट ना धराशायी हो जाते हैं। बट अगर मैं आपको ये बता दूं ना कि 16.66% इज इक्वल टू 1/6, अगर ये रेशियो आपको पता है ना, तो फिर आपका काम यूं चल के आएगा। अब ये कौन से रेशियोज आपको याद रखने हैं, आई हैव मेड अ वीडियो नंबर 8 ऑफ परसेंटेज, video 8. Please watch this video if you want to understand this thing, and that actually is going to be simplifying your majority of the problems related to profit and loss, and then percentages, and then mixture and alligation and ratios. तो वो वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। So this one is 16.6, which is coming out as 1/6 in what ratio? Must water be mixed with milk? अब आपको सेलिंग प्राइस, मैंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 1/6 of CP. Obviously you calculate this onto the selling price. Now again I'm gonna assume that pure milk is being sold at 100 rupees per liter, ठीक है जी, on selling mixture at the cost price. तो मिल्क आपने ले लिया 100 रुपीज पर लीटर का। So what is going to be the cost price? अब इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे कस्टमर ने कितना दिया, कस्टमर तो अंडर दिस अजम्पशन के हो तो प्योर मिल्क लेके जा रहा है, उसने 100 रुपए दे दिया। सो सेलिंग प्राइस इन दिस केस इज 100 रुपीज विच इज 7/6 ऑफ CP. सो CP कम्स आउट एज हाउ मच, 100 इंटू 7/6। इतने का तो हो गया क्या, दूध। अब अगर इतने का दूध हो गया, नॉट, तो पानी कितने का हुआ। सो दिस इज गोइंग टू बी द मिल्क, प्रोबेबली नाउ यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम। 100 इंटू 6/7 रुपीज का हुआ, क्या हुआ, मिल्क हुआ। तो वाटर कितने का हुआ, भाई जितना कॉस्ट प्राइस है उतने का ही तो दूध है, बाकी तो जो बच गया वो सारा का सारा प्रॉफिट है। तो 100 रुपीज दे दिया कस्टमर ने, 100 रुपीज दे दिया कस्टमर ने, आपने दूध उसको इतना ही दिया। सो 100 माइनस दिस वैल्यू विच इज 100 इंटू 1/7 रुपीज, इतने का आपने कस्टमर को क्या दे दिया, पानी दे दिया। और आपसे प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, दे आर आस्किंग यू इन व्हाट रेशियो मस्ट मिल्क बी मिक्स्ड विथ वाटर। So what is going to be the ratio of milk and water? See this, milk and water के जब आप रेशियो लिखोगे ना, इसमें कॉमन वैल्यूज लिखने की तो जरूरत है नहीं है। कॉमन वैल्यूज क्या है, 100 in the numerator and 7 in the denominator in both of the cases. So milk and water are being mixed in what ratio? 6:1 ratio. So what did I say in this question? You need to be aware of certain percentages and ratios. 16.66, 93.33, 93.25, those are the values that are very important. तो ये सारी के सारी वैल्यूज जो है उस वीडियो नंबर 8 परसेंटेज में रखी हुई है। सो यू गो एंड वॉच दैट वन। So probably this is what I had in this video. So you need to have a working understanding of profit and loss and percentages to solve these kind of problems, and those videos are placed for you. Go and watch at them at your own pace. They're meant for these kind of problems. जब तक वो लगेगा नहीं तब तक ये कहाँ से बनेगा आपसे। Now in video number 4 I am going to be solving these kind of problems, और मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, this they are only for CAT, no other examination, because
अब ये क्वेश्चन अगर किया नहीं ना तो फिर मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीटली खत्म करने का मतलब नहीं बनता है. एंड फॉर कैट, mixture and alligation is a very important topic. So I'm going to be taking a lot of problems only for management examinations in the next video. Till then, bye bye and take care, and thank you very much for